We are basically trying to see that given a state space model of a system, we want to see whether the system is controllable or not. So we have a model x dot equal to ax plus bu. And we want to test it for controllability. We want to see whether the system is controllable or not. So yesterday I discussed one simple way of assessing the system for its controllability was by diagonalizing the system. So you diagonalize the system. We got a system like this, z dot equal to delta z plus tau u. Isn't it? Where this lambda is equal to lambda 1, lambda 2, so on up to lambda n, all zeros here, all zeros here. And tau is some matrix, some vector. Like this. It has some entries. Let me call them as R1, R2, so on, up to Rn. So what did I tell you yesterday? How do you test the system for its controllability once you diagonalize it? Yes, row number 3 or row number 4. Is row number 4 there? Who's row number 4? Row number 6. I guess yesterday that attendance sheet has been shown to you and will be strictly detaining students if they fall short of attendance. So is row number 10 available? 11? Yes, sir, roll number 10. Okay, row number 10. Yes, tell me, how do you see whether the system is controllable or not? Yesterday you were present? Yes, sir. बताओ मुझे इसमें कैसे जब हम डायग्राम बताओ सर अगर एंट्रीज नॉन जीरो होगी इफ तो हम पता कर सकते हैं किसकी एंट्रीज सर सिस्टम इज कंट्रोलेबल इफ द टीओ की एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए सर टाउ मैट्रिक्स जो वेक्टर जो है इसकी अगर एंट्री सभी नॉन जीरो है तो सिस्टम कंट्रोलेबल है यस सर if any one of its entry is 0 that means the system is not controllable, isn't it? Yes, sir. So the controllability test goes like this. You have to check the entries of this tau matrix, tau vector or matrix. If all of its entries are non-zero, then the system is controllable. Isn't it? If any one or more of its entries are 0, then the system is uncontrollable. Is that clear? Yes, sir. Okay. तो इसमें हमने सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन ये रखी थी कि इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए क्योंकि डायगोनलाइज्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन तभी मिलता है ब्लॉक डायगोनल फॉर्म के लिए जिसमें कि आइगन वैल्यूज रिपीटेड हैं जिसमें कि प्योर डायगोनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता
उसमें पहले मैंने आपसे कहा था कि वो चीज़ आप पहले रिवाइज करोगे. आई गेस यू हैव रिवाइज्ड. So I will come to that, and we can have a check on those systems also for controllability by checking the entries of this tau vector. But the test there is something different. वहाँ पे भी ऐसे जीरो नॉन जीरो ही देखना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, क्योंकि उसमें प्योर डायगोनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन नहीं होती. I'll come to that. So this is one simple test for checking the controllability of the system. Before I move further, I would like to a bit elaborate on it. Now see, how do you, if you have been given a state space model, how do you check the system stability from the diagonal form representation? आपने डायगोनलाइज किया सिस्टम को, आपको बोलना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, तो कैसे देखते हैं? From So diagonal element should lie in the left half. डायगोनल एंट्रीज, क्योंकि वो आइगन वैल्यूज होते हैं इसके, तो वही डायगोनल एंट्रीज हम देखते हैं. अगर सभी डायगोनल एंट्रीज के रियल पार्ट्स नेगेटिव हैं तो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज ये अनस्टेबल है ना? We check the diagonal entries and see whether the system is stable or not. Now, I want to illustrate something here. Let's say you have a system like this. X dot, ये मैंने diagonalize किया हुआ एक system. Z dot equal to, let's say something like this: -1, -2, -3. There is 0 here, 0 here, 0 here, 0, 0, and 0. This is, sorry, let me write Z only. This is Z plus, yeah, let's say 2, 3, 5, U. Okay. So I will write something here. What about the stability of the system? Is this system stable? Yes. This system is stable, isn't it? Because all its eigenvalues are having negative real parts. So it is a stable system. And what about controllability? Is it controllable? Yes, sir. It's controllable because all the entries of this tau matrix vector, they are non-zero. So it's controllable. Okay. Now consider another situation. Let me write it. पूरा लिखूं मैं, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ पूरा, ताकि आपको क्लियर हो जाए. I will write Z1, Z2, and Z3. यहाँ पे भी I will write Z1 dot, Z2 dot, and Z3 dot. Then I will write here Z1 dot, Z2 dot, Z2 dot. This is Z1, Z2, Z3 plus, let's say 2, 3, 5, and U. Roll number 40. Are Yes, you sir. online? Yes, sir. Yes, sir. 40. Tell me about the system. Is it stable? Sir, it is not stable. It's unstable because one of its eigenvalue has got a positive real part, right? Yes, sir. It's unstable. But at the same time, what about controllability? Sir, controllable. It is controllable. It's unstable, but it's controllable. Controllability means that you have a control over its dynamics. That means the unstable जो इसका state है उसको stabilize किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ये controllable है. तो अगर system unstable है लेकिन controllable है, that system is actually stabilizable. Are you getting me?
stabilizable means can be stabilized और can be made stable, क्योंकि इसमें जो ये वाला आइगन वैल्यू है 3 वाला, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी z3 डॉट इक्वल टू 3z3 प्लस 5u। तो आपको इसमें u की टर्म अवेलेबल है, ये कंट्रोलेबल है, तो आप इसमें you will see later on how we can do that. The point that I'm trying to make here is I'm trying to give you an idea about stabilizability. It's an unstable system. Normally, अगर unstable system है, जब तक इसको stabilize नहीं करेंगे हम, तब तक इसको use नहीं कर सकते. An unstable system cannot be used at all. But the positive point is that it's controllable. Although it's unstable, but it's controllable. Since it's controllable, you can stabilize its dynamics. You can do something from feedback or something and you can stabilize it. We'll see that later on how we stabilize it. That's a different question altogether. The point first is whether you can proceed to make it stable or not. For that, the condition is controllability. The system is controllable, although it's unstable. So this system can be stabilized. Are you getting me? Are you getting me? Yes, sir. Okay. So this is a what you call this system is a stabilizable system because although it's unstable, it's controllable. मैं कुछ 2-4 situations आपको ऐसे ही बताऊंगा. ये दूसरी situation है. Let's go to third situation. You have a situation like this. Z1 dot, Z2 dot, and Z3 dot is equal to, let's say you have -1, -2, and 3, just like in the previous case. It's like this. This is Z1, Z2, Z3. Then you have something like this. Let's say 2, 0, 5 into U. Okay. So what about this system? This system is unstable. Unstable, very nice. And what about controllability? Uncontrollable. Uncontrollable. है ना? It's unstable and uncontrollable. Unstable because one of its eigenvalue has got a positive real part. तीसरा ये जो 3 वाला eigenvalue है, और uncontrollable क्योंकि इसमें एक एंट्री जो है वो 0 है tau वाले वेक्टर, isn't it? Now normally you would say that since the system is unstable and uncontrollable, you will not be able to stabilize it. So that means the system cannot be used. But there's a silver lining here. There is something that you have to note down here. इसमें आप देखो डायगोनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा फायदा ये है जो मैंने कल भी आपसे कहा था कि डायनामिक्स डीकपल हो जाती है एंड यू गेट टू नो व्हिच पर्टिकुलर स्टेट इज अनकंट्रोलेबल, किस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू की वजह से अनकंट्रोलेबिलिटी आ रही है। इसमें आप देखो इसमें 3 आइगन वैल्यूज हैं। -1 वाला जो आइगन वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो कंट्रोलेबल है क्योंकि पहली वाली इक्वेशन में u वाली टर्म आती है। आर यू फॉलोइंग मी? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट इज z1 डॉट इक्वल टू -z1 प्लस 2u, इजंट इट? दूसरी वाली इक्वेशन जो है दैट इज z2 डॉट इज इक्वल टू -2z2 प्लस 0, उसमें u वाली टर्म नहीं है। पहली वाली इक्वेशन जो आपकी है दैट इज z1 डॉट इक्वल टू -z1 प्लस 2u, isn't it? z2 dot is equal to -2z2 and z3 dot is equal to 3z3 plus 5u. Is that clear? यही है ना 3 इक्वेशंस। तो पहला वाला स्टेट जो आपका है z1 वाला स्टेट ये कंट्रोलेबल है, isn't it? सेकेंड वाली इक्वेशन में
u नहीं है तो ये अनकंट्रोलेबल है. ओवरऑल आपका सिस्टम अनकंट्रोलेबल है, लेकिन डायगोनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन से आपको, क्योंकि डायनामिक्स डिकपल हो जाती है, यू कैन इंडिविजुअली से व्हिच पर्टिकुलर स्टेट इज कंट्रोलेबल एंड व्हिच वन इज अनकंट्रोलेबल. ये वाला स्टेट जो है ये कंट्रोलेबल है. आर यू गेटिंग मी? इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. Now just see one thing. इसमें जो वाला आइगन वैल्यू अनकंट्रोलेबल है वो स्टेबल है, लेकिन isn't it? Z2 dot equal to -2 Z2 plus U. ये वाला आइगन वैल्यू स्टेबल है, लेकिन at the same time it is uncontrollable. That means even if you change U, this eigenvalue is going to stay there. That means it's going to stay stable because it's not altered by changing U. U को change होने से ये जो ये वाला आइगन वैल्यू है जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट Z2 है, वो वाला आइगन वैल्यू तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि इसको तो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते. So it will stay stable. It is uncontrollable but stable. This is controllable and stable. This is controllable but it's unstable. तीसरा वाला जो है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. पहले वाले आइगन वैल्यू में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स कंट्रोलेबल एंड स्टेबल, इसके साथ तो कुछ भी कर सकते हो आप, कहीं पे लेके जा सकते हो इसको. दूसरा वाला आइगन वैल्यू जो -2 वाला है, इसमें u वाली टर्म है ही नहीं, तो कंट्रोल इनपुट को कैसे भी चेंज करो आप, ये Z2 वाला स्टेट ऑल्टर ही नहीं होने वाला. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू इट विल स्टे एट -2. Now consider the third eigenvalue, which is unstable. The silver lining is that it is at the same time controllable. That means if you change U, you can make this state stable by altering the position of its eigenvalue in the state space to some stable position. That means ये वाली situation better है. Although ये system unstable, uncontrollable है, but it is stabilizable. स्टेबलाइजेबल कैसे है ये? क्योंकि इसमें जो अनकंट्रोलेबल स्टेट है वो स्टेबल है, और जो अनस्टेबल स्टेट है वो कंट्रोलेबल है. आर यू गेटिंग मी और नॉट? Yes, sir. So this, so when you have to see whether the system is stabilizable or not, it is easy to check it from the diagonal form representation. The diagonal form representation, जैसे ये वाला केस है, although start में if somebody if somebody tells you a system is unstable and uncontrollable, normally you would straight away discard that system. You will say that I cannot use it because it's unstable and at the same time it's uncontrollable, so it's not stabilizable. But then when you delve in it a bit further, you see, in this particular case you are seeing that the uncontrollable state is stable. So whatever even if it is uncontrollable, you are not able to alter it, you are not able to change it, it will stay stable forever. It will always stay stable, this particular state. And the third eigenvalue, जिस उसके corresponding वाला state जो कि unstable है, लेकिन silver lining ये है कि वो controllable है, उसमें आप u को change करके उसको control कर सकते हो, उसको stabilize कर सकते हो. तो ये वाली situation stabilizable है. अगर ऐसी situation है तो इस situation में आप अपने system को stabilize कर सकते हो. Is that clear? Now I will consider another situation. If you are clear about it so far, I will take another situation. Take another situation. You have something like this. You have got Z1 dot, Z2 dot, Z3 dot is equal to. So you have -1, -2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, like this. Then you have Z1, Z2, Z3 plus you have, let's say, 2, 3 and C into U. So what is is this system stable? No, sir. No, sir. It is unstable.
What about controllability? Uncontrollable. It's uncontrollable. Now let's try to assess this situation. In this case, the state which is uncontrollable, the state which is unstable, that means the Z3 corresponding वाली जो state है, it is at the same time uncontrollable. इसमें जो तीन equations बनेंगी, that is Z1 dot equal to minus Z1 plus 2U, Z2 dot equal to minus 2Z2 plus 3U, and Z3 dot is equal to 3Z3. इसमें U वाली term नहीं है. This is stable and controllable, isn't it? This is stable and controllable. And this one is unstable and uncontrollable. पहले दो स्टेट्स हैं वो स्टेबल भी हैं कंट्रोलेबल भी हैं तो इसमें तो इट्स a win-win situation. That means you can do anything with the dynamics of Z1 and Z2. But the third state corresponding to Z3, it's unstable. And the negative point is that it's at the same time uncontrollable. That means whatever way you change U, you cannot stabilize this state, this Z3. Are you getting me? Yes, Do you sir. get me? So this system is not stabilizable. Are you getting me? You cannot stabilize this system under any circumstances. So this system cannot be used at all. ये वाला सिस्टम आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये वाले सिस्टम को आप स्टेबलाइज नहीं कर सकते. It's not stabilizable. Are you getting me? Is this concept clear? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ये आइडिया भी दे दिया कि स्टेबलाइजेबिलिटी क्या होता है. Stabilizability is actually it tells you whether you can stabilize the system or not by changing the input. तो उसके लिए जरूरी है कि इनपुट अफेक्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेट को, तभी तो आप इनपुट को चेंज करके उस स्टेट को चेंज कर सकते हो, स्टेट को स्टेबल बना सकते हो अनस्टेबल से, या उसकी डायनामिक्स को कंट्रोल कर सकते हो. डायनामिक्स को कंट्रोल करना मीन सेम थिंग. If it is unstable, you can stabilize it. If it is stable, you can make it more stable. Last time I talked about relative stability. So if you are convinced about stability, then you can proceed to improve its response also. But for that, the system has to be controllable. So controllability, so this is some idea that I wanted to give you about stabilizability. I will take one more situation, which is a simpler one. So you have got something like this. You have got Z1 dot, Z2 dot, Z3 dot is equal to, you have got, let's say 1, 2, 3, this is 0, 0 like this. This is Z1, Z2, Z3, plus you have got, let's say 2, 3, 5, U. What about this system? This is an Unstable. unstable system. And what about its controllability? It is controllable. So unstable system controllable है लेकिन तो इसको stabilize कर सकते हो आप. It is stabilizable है ना? क्योंकि इसमें आप किसी भी U को चेंज करके तीनों स्टेट्स की डायनामिक्स इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हो और उनको स्टेबलाइज भी कर सकते हो. ये कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे. दैट इज एक्चुअली डिजाइन. हाउ डू यू डिजाइन अ कंट्रोलर टू मेक इट. अगर आपका सिस्टम डिजाइन में एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकती है कि आपका सिस्टम अनस्टेबल है और आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसा कंट्रोल इनपुट डिजाइन करो कि सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए. आर यू गेटिंग मी? सो दैट कैन बी वन ऑफ. तो उसके लिए ये चीजें देखना पहले जरूरी है कि क्या ये सिस्टम स्टेबलाइजेबल है कि नहीं. The first thing that you have to check in that case is whether the system can indeed be stabilized.
So for that, you have to check the stabilizability of the system before you proceed to design a controller for stabilizing the system. A system which can be stabilized, only for that system you can actually design a controller so that you can make the system stable. Is that clear? Clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गया एक कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट. इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट हैं या कुछ और कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट हैं जो हमने डिस्कस करना है क्लास में. So we are basically discussing controllability tests. Controllability tests. एक तो हमने देखा फ्रॉम डायगोनल फॉर्म प्रेजेंटेशन. दूसरा कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट डिस्कस करने से पहले I would like to state a theorem which actually will give me those tests. The theorem statement is something like this. The necessary and sufficient condition, आपके पास सिस्टम है x dot equal to ax plus bu. और इसको मैं बोलूँ equation 1. The necessary and sufficient condition for the system defined by equation 1 to be controllable is given by any one of the following. तो मैं दो कंडीशन स्टेट करूंगा यहाँ पर. Is given by any one of the following. First is controllability Gramian. There's some new terms I'm introducing. Controllability Gramian defined as WC 0, T1. It's defined like this. I'll get to its background later. Integral of 0 to T1 e to the power minus AT B transpose e to the power minus K transpose T dt is non-singular. This is one condition. For the time being, you just write down the statement of the theorem. I will get to the details in a short while. So the necessary and sufficient condition for the system defined by 1 to be controllable is given by any one of the following. The first condition is the controllability Gramian, which we define as WC0T1. It will actually be a matrix. You know what is this actually? ये तो पता है ना आपको? E to the power minus AT हमने किया है ना? Yes, sir. What is e to the power AT? That's actually your state transition matrix, isn't it? So this is actually a matrix. इस matrix का size क्या होगा? What will be the size of this matrix? N cross N. है ना? और B का size क्या है? B का size क्या है? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम के लिए N cross 1. N cross 1. एंड B ट्रांसपोज का साइज क्या होगा? 1 cross 1 cross है. और ये e to the power minus a transpose tau, because
So यहाँ पर तो just एक difference है, एक ही जगह A ट्रांसपोज दिया हुआ है. Its size will also be n cross n, है ना? तो इसके जो सारे प्रोडक्ट का साइज क्या होगा? n cross n, isn't it? Are you getting me? Yes, sir. So this is actually the integration of a matrix. So each individual term of the matrix will be integrated. So you'll end up with finally ये जो मैं define कर रहा हूँ ये यहाँ पे ये भी एक matrix ही होगा जिसका कि size n cross n होगा, isn't it? Are you getting me? Yes, sir. So this will actually be a matrix. So necessary and sufficient condition for a given system whose state equation is given for this system to be controllable. The necessary and sufficient condition is that the controllability Gramian, which we define like this, and I'll tell you what is where from has it actually come. So if this is non-singular, then your system is controllable. Are you getting me? And the second condition is that the n cross n controllability matrix defined as, we actually represent it as a matrix UC. That is the controllability matrix, and it's defined like this: B, AB, A square B, so on, up to a to the power n minus 1b is a full rank matrix, or we can also say it's non-singular. The second condition, as per this theorem, actually any one of these conditions, if it's satisfied, then the system is controllable, because if you can prove that the controllability Gramian is non-singular, that in turn implies that this particular matrix is a full rank matrix. Or if you can prove that this is a full rank matrix, that in turn implies that controllability Gramian is non-singular. So the second condition is that the n cross n controllability matrix, which is defined like this, it's a full rank matrix. So you define a matrix like this. Why from this has come? We have to prove it. So what is the size of this B? Yes. What's the size of B? n cross 1. n cross 1. N cross 1. What is the size of AB? A का size क्या है? N cross N. B का N cross size 1. क्या है? This is also N cross 1, है ना? और A square B का size क्या है? n cross 1. हाँ? N cross 1. तो इन सब ये जो सभी टर्म्स मैंने लिखी यहाँ पे, इनका साइज n क्रॉस n है. तो इस पूरे मैट्रिक्स का साइज क्या होगा फिर? n cross B है ये n क्रॉस n, isn't it? ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है. इसमें टोटल कितने कॉलम्स होंगे? n कॉलम्स, isn't it? क्योंकि मैं इसका n-1 तक इवैल्यूएट कर रहा हूँ. तो इसका साइज जो होगा पूरे मैट्रिक्स का वो n क्रॉस n होगा. So जब आप ये controllability matrix define करोगे, then you have to check its rank. How do you check the rank of a matrix? How do you check whether a matrix is full rank or not? अगर आपको rank, absolute rank नहीं चाहिए, खाली आपको ये बताया जा रहा है कि मुझे बताओ कि ये matrix full rank है कि नहीं, ये तो कैसे देखते हैं? Non-singular. Determinants. Determinant non-zero. Determinant non-zero. क्या करते हैं? सर डिटर्मिनेंट Determinant non-zero. डिटर्मिनेंट देखते इसका हैं. determinant होते हैं. अगर हमें खाली absolute rank, अब हमें देखना है कि ये matrix full rank है कि नहीं है, तो ये जो matrix बनेगा यहाँ पे, इसका determinant हम evaluate करेंगे. अगर इसका determinant 0 आया तो ये full rank matrix नहीं है. अगर इसका determinant non-zero आया तो ये full rank matrix है, isn't it? Is that okay? तो इसका ये देखने के लिए कि सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है, तो आपको ये मैट्रिक्स, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट फॉर चेकिंग द सिस्टम कंट्रोलेबिलिटी. दिस वन इज इजियर एज कंपेयर्ड टू अदर मेथड्स. So you just have to frame this matrix and check its rank. If this matrix has got rank equal to n, in that particular case, you can conclude that the system is controllable.
But if its rank is less than n, then that means its determinant is 0, then the system, that actually implies that the system is not controllable. Is that clear? तो ये कैसे है, क्यों है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. So before I make you understand this theorem, I would first of all like to discuss with you ये ग्रामियन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ग्रामियन कहां से आया, what actually is a ग्रामियन. तो ये हम थ्योरम को साइड में रख के let us have some background discussion. If you have, let's say, three vectors, let's say x1, x2, and x4. x1 is, let us say, 1, 1, and 4. x2 is 1, 2, and 3. And x3 is 4, 1, and 6. तीन वेक्टर्स हैं, हर एक वेक्टर के तीन तीन कंपोनेंट्स हैं. तो मतलब ये 3 डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग करते हैं ये वेक्टर्स. So if I make a set of these vectors, like if I have three vectors, x1, x2, and x3. I have to see whether these vectors are linearly dependent or independent. I've already discussed this thing with you. How do we do that? How do we say whether a given set of vectors is dependent or independent? सर कोई कॉमन फैक्टर हो इन तीनों का, तो क्या नहीं होना चाहिए? कोई कॉमन जैसे मैंने फैक्टर आपको ये तीन वेक्टर्स दिए, आपको मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ जी ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो कैसे करेंगे? ये इंडिपेंडेंट है. कोई वेक्टर नहीं, कोई कॉमन स्केलर फैक्टर नहीं होना चाहिए जो मतलब एक को kx करें. That's okay. One vector should not be a multiple of other vector, isn't it? Scalar multiple of other vector. That's okay. Yes. लेकिन ऐसे जैसे मान लो तुमको मैंने 10 वेक्टर्स दिए और 10 वेक्टर्स में तुमको मैं बता रहा हूँ कि बता दी ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो उसमें देखना मुश्किल है ना. इंस्पेक्शन से देखना डिफिकल्ट है. डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा सर. डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा अगर डिफरेंस हो गया. इसमें इजी तरीका ये है कि आप ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनका एक मैट्रिक्स बनाओ, है ना, ऐसे. That's 1, 1, 4, 1, 2, and 3, and 4, 1, and 6. ये तीन वेक्टर्स जो हैं इनका एक डिटरमिनेंट बनाओ. 0 हो जाएगा. अगर ये इसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करके 0 आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट हैं. और अगर ये नॉन जीरो है, दैट एक्चुअली मींस दैट दिस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इजंट इट? इज दैट ओके? यस सर. और जो मैंने लास्ट टाइम जब हम डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे उसमें मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताई थी डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए. आई टोल्ड यू दैट यू एक्चुअली ये जो तीन वेक्टर्स हैं आप इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो लाइक दिस: अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3. याद है जब हम प्रूव कर रहे थे कि आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस टाइम हमने ये फॉर्मुलेशन यूज की थी कि अगर आपको एक गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स देखना है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो आप उनकी एक लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करो. ये अल्फा जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दे आर रियल स्केलर्स. Are you getting me? You define the linear combination of these vectors and put it equal to 0. यस सर. तीनों साइमल्टेनियसली, तीनों अल्फा साइमल्टेनियसली 0 होना चाहिए तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. Really nice. If all alphas are 0, if the only solution to this equation is all alphas equal to 0, then the set of equations is linearly independent, isn't it? But if there is some non-zero solution of alpha, even if one of the alphas comes out to be non-zero and this equation is satisfied, then the set of vectors is linearly dependent, isn't it? Yes sir. याद है ये हमने ये कंडीशन आपको डिस्कस की थी जब हम वो आइगन वैल्यूज वाली थ्योरम प्रूव कर रहे थे, है ना? Yes sir. Yes sir. Now I would like to just elaborate on this.
Now consider another situation. You have x1 as 1, 1, and 4. x2 as same 1, 2, and 3. And x3 as 4, 1, and 6. And then you have another vector, x4 as 3, 1, 5. Let's see. ठीक है? इसमें आप देखो, how many vectors have I given you? 4 vectors. Isn't it? I have given you 4 vectors, and each vector has how many components? Each vector having 3 components. 3 components. That means these vectors belong to which space? They belong to a 3-dimensional space. Isn't it? 3-dimensional space में कितनी independent directions होती हैं? 3 3 Three. independent directions होती हैं. तो मैं vectors कितने दे रहा हूं आपको? 4. और आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि बताओ ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा सर इस x1 केस में जब अगर 3 से ज्यादा होगी तो सारे के सारे मतलब ये फिर लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे ही होंगे. Okay, very nice, very good. So so for a particular n-dimensional space, you can have a set of linearly independent vectors having how many entries in the set at the most? You can have at the most N n plus one. entries in the set, isn't it? You can have at the most n entries in the set. Is everybody on board? Is everybody getting what I am trying to explain? Yes, sir. Yes, sir. You have actually, I have defined 4 vectors here, each vector belonging to a 3-dimensional space, and I am telling you, tell me whether this set of vectors is linearly independent or not. You should immediately tell me how can this set of vectors be linearly independent. In a 3-dimensional space, you can have only 3 independent directions, so the set of vectors cannot be linearly independent. Are you getting me? तो अगर मैं ये मैट्रिक्स बनाऊं, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा नहीं. इसका जो मैट्रिक्स होगा, आप मुझे बता सकते हो कि वो जो मैट्रिक्स बनेगा x1, x2, x3 और x4 को मिला के उसकी मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है? अगर मैं एक मैट्रिक्स, यस, what can be the maximum rank of that matrix? If I make a matrix like this, 1, 1, 4, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, 3, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 6, है ना? तो इसकी मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है? 3 हो सकती है सर. Maximum rank of this matrix can be 3, isn't it? Because at the most there can be 3 independent directions specified by these vectors. Are you getting me? Now, Yes, sir. So if we have to actually solve this problem कि मुझे एक set of vectors दिया गया है जिसमें कि number of vectors और components जो vectors के हैं, number of components in each vector, उसमें difference है और मुझे बताना है कि बताओ जी ये set of vectors linearly independent है कि नहीं. तो उस केस में हम क्या करेंगे? We will formulate a strategy to check the independence of these vectors. Although you can see here, like in this particular case, the maximum rank of this matrix, the column rank of this matrix can be 3, isn't it? Column rank means columns की dependence आपस में. अगर मैं rows की dependence देखूं, वो भी same pattern follow करेगा. The column rank of a matrix is actually equal to its row rank. If the rank of this matrix column wise, अगर मैं columns की independence देखूं, अगर column rank इसकी 3 आ रही है, तो row rank भी 3 ही आएगी. Because the column rank of a matrix is equal to its row rank. So let's say now, let me try to just give a formal definition to this dependence independence. So linearly dependent vectors. I'm just basically trying to take you towards the definition of Gramian. What's the Gramian? जो controllability Gramian हमने define किया, वो होता क्या actually? Linearly dependent vectors. So you consider a set of m vectors.
each vector having n components. Each vector having n components. If there exists m scalars alpha I going from 1 to m. If there exist m scalars alpha I while I goes from 1 to m, at least one of which is non-zero, such that one of which is non-zero, which satisfies alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus so on, alpha m xm equal to 0, then the given set of vectors is said to be linearly dependent. मान लो मेरे पास एक n dimensional space है. As an example, let's say I have 10 dimensional space. Okay? And I am giving you 7 vectors in that. एक 10 dimensional space में मैं आपको 7 vectors define करके दे रहा हूं और बता रहा हूं कि बताओ मुझे ये 7 vectors हर एक वेक्टर के 10 कंपोनेंट्स हैं. Are you getting me? एक 10 dimensional space में मैं आपको 7 vectors दे रहा हूं which belong to that space. Every vector in that space has got 10 components. I am telling you, tell me whether these vectors are, if I give you more than 10, you will immediately tell me that this given set of vectors is linearly dependent, because in a 10 dimensional space you cannot have a set having more than 10 linearly independent vectors. Are you getting me? Yes, sir. मैं आपको m vectors दे रहा हूं. मैं आपको एक n dimensional space में, मान लो 10 dimensional space में मैं आपको 7 vectors दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ जी ये 7 vectors डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है. सो उसको देखने का तरीका क्या है कि आप एक इक्वेशन ऐसे डिफाइन करो, आप स्केलर्स डिफाइन करो, अल्फा 7 स्केलर्स, अगर आपको 7 वेक्टर्स देखने हैं और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लो, तो यहाँ पे m और n से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यू मेक द लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन अल्फा 1 xm इक्वल टू 0. If you can find at least one non-zero solution to this alpha, then the given set of vectors will be linearly dependent. In other words, a non-zero solution actually means that you will be able to get some vectors as the linear combination of other vectors, which actually tells you that this set of vectors is linearly dependent. Is that clear? Clear to all? Yes, sir. The definition of linearly dependent vectors. So correspondingly, we can define linearly independent vectors. Linearly independent vectors. Any set of vectors which is not linearly dependent is said to be linearly independent. Any set of vectors which is not linearly dependent is said to be linearly independent. That means, so that is
if alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus so on, alpha m x m equal to 0 implies that each alpha is 0, that each alpha I is equal to 0, then the set of vectors is linearly independent. Are you getting me? Means आपने linear combination in vectors की define की through scalars alpha 1 up to alpha m, which are real scalars, and to solve this equation. If the only solution to this equation is all alphas equal to 0, then the given set of vectors is linearly independent. Do you get me? Is that clear? Yes, sir. Okay. अब मैंने आपको स्टार्ट में एक केस ऐसा बताया जिसमें कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक वेक्टर में और नंबर ऑफ वेक्टर्स सेम थे, तो उस केस में डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस देखने के लिए आपने एक मैट्रिक्स बनाया और उस केस में वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन के आ गया और स्क्वायर मैट्रिक्स की आपने रैंक देखी या स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट चेक किया. अगर वो डिटरमिनेंट 0 था तो आपने कहा कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर वो नॉन जीरो था तो आपने कहा कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दूं जिसमें कि आपको मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं, यू हैव गॉट, लेट्स से I am giving you 4 vectors with 5 components each. I am giving you 1 1 2 3 1, let's say एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर दे रहा हूं 1 2 1 4 and -1, तीसरा वेक्टर है 2 1 3 6 and 2, and fourth vector I am giving you 1 0 2 3 and 6. I am giving you 4 vectors, each vector having 5 components. That means they belong to a 5-dimensional space. And I am asking you a question. Just tell me whether this set of vectors is dependent or independent. So how do you do it? इसमें वो वाला मेथड तो आप यूज कर नहीं सकते कि इसका डिटरमिनेंट बनाएंगे, क्योंकि ये तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, isn't it? ये मैं 4 वेक्टर्स आपको दे रहा हूं, हर एक वेक्टर की 5 कंपोनेंट्स है, मींस ये 5-डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग करता है ये वेक्टर. तो और मैं वेक्टर्स आपको 4 दे रहा हूं, ये 4 वेक्टर्स डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. So if I have to check whether these vectors are dependent or independent, so what should I do? वो वाला मेथड तो चलेगा नहीं कि मैं इन वेक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाऊं, क्योंकि वो जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो डिफाइन ही नहीं है. Isn't it? Are you getting me? Yes, sir. So what do we do in this case? So I will show you a procedure through which we can solve such problems. We can actually solve such problems. We can check the dependence independence of such problems जहाँ पे कि ऐसी सिचुएशन आए कि मैं डिटरमिनेंट मेथड से या वो डिटरमिनेंट बना के मैं देखता था सिस्टम इसका रैंक देखता था, उससे बताता कि सिस्टम डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है. So वो तो मेथड में यहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकता. So how do you proceed in such case? So I'll show you a method for checking whether the set of vectors is dependent or independent, and that will actually lead to me the concept of grammars. So test for linear dependence oblique independence of vectors. Okay. So consider a set of m vectors. M vectors xi, that means x1, x2, x3 up to xm, each vector having n components. Where m is less than or equal to
इक्वल टू n हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्वल टू n के केस में we can simply make that get a square matrix and obtain its determinant. लेस देन n वाली सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है. तो इस केस में मुझे इन सेट ऑफ ये जो वेक्टर्स है मुझे देखना है कि इनकी ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है. सो आई assume that the given set, I'll prove this, I will just give you a test which actually gives me a solution through contradiction. So I assume that the given set of vectors is, or I define a linear combination of these vectors, of this set of vectors, using scalars, real scalars, alpha I going from 1 to n. I define a linear combination as alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus so on, alpha m x m equal to 0. I define something like this. Are you getting me? जो मैंने आपको बताया लीनियर डिपेंडेंस देखने के लिए, अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, only possible solution अगर इसका है कि all alphas are 0, then the given set of vectors is independent, and if there is a non-zero solution to this set of equations, then the set of vectors is dependent. But how do we actually do that? Mind it, the 0 here is not a scalar 0. This is a vector 0, isn't it? क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, x1 का साइज क्या है? x1 एक कॉलम है ना, x1 का साइज n क्रॉस 1 है. Alpha 1 scalar है, so this is 1 cross 1. So this is also, what is this? No, this is 1 cross 1. Yes. So this is basically 1 cross 1. So this 0 is actually a scalar 0. Sorry. So this will be 1. This will be 1 cross 1. Now you have an equation like this. Now in this particular equation, what I do is, this is equation 1. I pre-multiply it on both sides. Sorry, यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया हमने. इसका size is basically 1 cross 1 है. The size of x1 is what? 1 cross n. Nobody is trying to just. It is just scalar. It will just multiply inside all terms. Multiplying all terms by alpha है ना, तो इसका साइज यही बनेगा ना जो x1 का साइज होगा इस 0 का, because we are adding, so addition के लिए compatibility जरूरी है ना. Are you getting me? Yes. So basically I am taking a linear combination of these vectors and I am multiplying them by this, and with this I'll just get, because this is basically a scalar multiplication, it's not a multiplication of vectors. So the size of the 0 will be the same as the size of x1. So what I am doing here is I pre-multiply both sides by x1 transpose. So what do I get here? I get alpha 1 x1 transpose x1 plus alpha 2 x1 transpose x2 plus so on alpha m x1 transpose xm equal to 0. Is that okay? So yes, I'm not able to hear you properly. So next class start है. Next class है, कौन सी class है आपकी? Which is the next class? Anybody else? Because we are not able to hear that time. Digital electronics. Digital electronics. Okay, we'll stop here. We'll carry. हम कल करेंगे आगे. So we will actually be discussing this test for dependence and independence in the next class. You can leave this time and go for your next class.